Consider the case of helium atom. Consider the case of helium atom. In the absence of external magnetic field, consider the case of helium atom. In the absence of external magnetic field, both the electrons experience only electrostatic force. Both the electrons experience only electrostatic force. अगर सेम फोर्स एक्ट करेगी तो एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, बट डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की ऑपोजिट, बिकॉज एक क्लॉकवाइज मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज. Thus both the electrons will have same angular velocity, but if one is moving clockwise, other will move anti-clockwise. The magnetic moments are oppositely directed and cancel out. Other will be moving anti-clockwise. The magnetic moments are oppositely directed and cancel out. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से क्या हुआ था? इन एडिशन टू Fe मैग्नेटिक फोर्स आल्सो एक्स. एक केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स सेम डायरेक्शन में, थर्ड डायग्राम जो बनाया तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी और मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ जाएंगे. दूसरे केस में Fe और Fm ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी और मैग्नेटिक मूवमेंट कम हो जाएगी. So you can write next paragraph में लिख लो. But if external magnetic field is applied, in addition to electrostatic force, magnetic force also acts. In addition to electrostatic force, magnetic force also acts. For electron in which magnetic moment is opposite to the external magnetic field, for electron in which magnetic moment is opposite to external electric field, external magnetic field, Fe and Fm are in same direction. Therefore, Fe and Fm are in same direction. Therefore, centripetal force increases. Angular velocity will increase. And magnetic moment will be m plus delta n. For the other electron, increase to m plus delta n. For other electron, Fe and Fm are oppositely directed. Net centripetal force decreases. Fe and Fm are oppositely directed. Net centripetal force decreases. Angular velocity will decrease. And magnetic moment will be n minus delta n.
सो एक m प्लस डेल्टा m और एक m माइनस डेल्टा m, नेट विल बी 2 delta m and direction opposite to field. Thus net magnetic moment is 2 delta m and its direction is opposite to the applied magnetic field. Check will explain कर दिया था सारा, बस सिर्फ लिखना रह गया था. नेक्स्ट जो दो आते हैं वो ऑलमोस्ट समझ आ रहा है. पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? पैरामैग्नेटिज्म इज diamagnetism is weak repulsion, paramagnetism is weak attraction. नॉर्मल हम लेते हैं कि because diamagnetism is shown by substances having paired electrons. तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें या ना करें, एटम की नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगी. क्या आपने अगर कोई मैग्नेटिक जैसे हीलियम एटम के पहले दो डायग्राम लिए, हमने कहा कि बिकॉज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो, मींस एटम इज नॉट बिहेविंग एज अ डाइपोल. मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उसमें डाइपोल मोमेंट आई है. फॉर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में लेते हैं दीस आर सब्सटेंसेस इन व्हिच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मान लो अगर, तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होगी, पेयर्स में कैंसिल होनी है. तो पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट में हर एटम जो है it behaves as a small magnet and it will have its own magnetic moment. कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में बेसिक डिफरेंस नहीं है कोई भी. दोनों में जो एटम्स हैं they have their own magnetic dipole moment even in the absence of field. अगर नहीं भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो हर एटम मैग्नेट है. और जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है दैट विल बी रैंडमली ओरिएंटेड. अगर रैंडम ओरिएंटेशन होगी तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी जीरो. और जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? टॉर्क एक्ट्स ऑन द डाइपोल. टॉर्क एक्ट करेगी बिकॉज आपने फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस इट्स इक्विवेलेंट टू करंट फ्लो का टॉर्क का फॉर्मूला ए क्रॉस बी. तो इसे जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, टॉर्क एक्ट्स ऑन दीस मैग्नेटिक डाइपोल्स. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था? इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है? थीटा जीरो या 180? जीरो. सो इसे डाइपोल्स ट्राइज टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जब तक कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, रैंडम ओरिएंटेशन. रैंडम ओरिएंटेशन मींस आप ऐसे शो कर सकते हो कि मेरे पास एक पैरामैग्नेटिक सैंपल है, मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो इसके अंदर जो डाइपोल्स हैं दे विल बी इन रैंडम ओरिएंटेशन. मतलब एक अगर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, तो सब अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं. तो अगर रैंडम ओरिएंटेशन होगी नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो. जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, टॉर्क एक्ट करनी शुरू हो जाएगी. टॉर्क एक्ट करेगी विच ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल. अभी हम ले रहे हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी जीरो है और फील्ड भी जीरो है. अगर मैंने फील्ड अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, तो डाइपोल्स भी इसी डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगे. डाइपोल्स अलाइन होना शुरू होंगे तो इनकी रैंडम ओरिएंटेशन नहीं रहेगी. तो start aligning in the direction of field. अब मैंने कंप्लीट अलाइनमेंट शो नहीं की, बीच में से दो तीन को शो किया जो डिफरेंट डायरेक्शन में है. इसका रीजन सबको अलाइन जो नहीं किया, सब फेरोमैग्नेट्स में लाइन होती है. फेरोमैग्नेट्स में दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं. मैग्नेटिक फील्ड कोशिश कर रहा है कि डाइपोल अलाइन हो जाए और थर्मल एनर्जी कोशिश कर रही है कि अलाइनमेंट ब्रेक हो. तो कभी भी कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं होगी बिकॉज जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यू टू टेम्परेचर है वो कोलिजन्स के कारण अलाइनमेंट को तोड़ने की कोशिश करती रहेगी. थोड़ी देर के बाद होगा, अगर ये अलाइन हो गया तो ये किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा.
तो पैरामैग्नेट्स में अगर आपको अलाइनमेंट बढ़ानी है, आप दो चीजें कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड कोशिश कर रहा था कि डाइपोल्स अलाइन हो जाए, टेम्परेचर कोशिश कर रहा है कि अलाइनमेंट ब्रेक हो। तो अगर आपको अलाइनमेंट बढ़ानी है, टेम्परेचर को कम कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो। अगर जो अलाइन करने की कोशिश कर रहा है उसके कारण जो टॉर्क लग गया वो बढ़ा दें, और टेम्परेचर को कम कर दें ताकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो पोजीशंस भी कम हो जाएगी। तो इसलिए पैरामैग्नेट में कभी कंप्लीट अलाइनमेंट शो नहीं करते, बट इट विल हैव सम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इट्स ओन। अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो कैसे मूव करेगा? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, कहीं पे कम। तो किस डायरेक्शन में? स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स ऑफ द फील्ड या वीकर टू स्ट्रॉन्गर? वीकर टू स्ट्रॉन्गर, बिकॉज अट्रैक्शन है। मतलब जैसे मैग्नेट है मान लो, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा मैग्नेट के पास या मैग्नेट से दूर? तो अट्रैक्शन है ना, तो मतलब वो दूर से पास आएगा, मतलब उस रीजन से मैग्नेट से दूर रखा तो मैग्नेट के पास आने की कोशिश करेगा। दूर मैग्नेटिक फील्ड कम था, पास ज्यादा है, तो इसे ट्राइज टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ऑफ द फील्ड। डायमैग्नेट में होता है रिपेल्ड, मैग्नेट के पास रखेंगे तो मैग्नेट से दूर जाएंगे, तो दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स। पैरों में सिर्फ डिफरेंस इतना, मूव तो वीकर से स्ट्रॉन्गर ही करना है। हम फेरोमैग्नेट में सिर्फ लिख देंगे दे क्विकली मूव्स, बिकॉज अट्रैक्शन ज्यादा है तो एकदम से अट्रैक्ट हो जाएंगे। Whereas पैरामैग्नेट में सिर्फ ये लिख देंगे कि दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ऑफ द फील्ड। ससेप्टेबिलिटी की अगर बात करें, ससेप्टेबिलिटी का आर्टिकल क्या लिखा था? ससेप्टेबिलिटी इज रेशियो ऑफ I bench. Intensity of magnetization क्या आती? Intensity of magnetization. Dipole moment per unit volume. तो अगर मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाता हूँ, H को बढ़ाता हूँ, I बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड अगर बढ़ाया जिसके कारण अलाइनमेंट हो रही थी, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी या नहीं? बढ़ेगी। तो वी कैन से दैट I is proportional to H. टेम्परेचर बढ़ाया तो अलाइनमेंट बढ़ेगी या कम होगी? मतलब I is inversely proportional to T। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ I proportional to, या I by H proportional to। I by H क्या होता है? Susceptibility. That means susceptibility is inversely proportional to temperature. Or you can say phi is equals to C by D. इस रिलेशन को हम कह देते हैं क्यूरीज फॉर्मूला फॉर ससेप्टेबिलिटी। अगर ग्राफ बनाना हो 1 by chi का और t का, कैसा बनेगा? 1 by chi और t, chi is C by D, तो 1 by chi is, अगर हम ऐसे ले रहे हैं chi is C by D, तो 1 by chi is, मतलब 1 by chi is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। C तो कांस्टेंट है, उस ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। I और H का ग्राफ, H बढ़ेगा तो वो भी स्ट्रेट लाइन, बिकॉज वो यहां से हम ले सकते हैं, बिकॉज ससेप्टेबिलिटी इज कांस्टेंट। chi को हमने कल ऐसे लिखा था, under given physical conditions I by H constant है, physical conditions अगर सेम है तो इसका ग्राफ जो बनेगा that will be straight line। अब मान लो आपको दो ग्राफ दिए सेम मटेरियल के लिए, उन्होंने कहा एक ग्राफ बनाया एट टेम्परेचर T1, एक ग्राफ बनाया टेम्परेचर T2, तो T1 ज्यादा है T2 ज्यादा है? इस ग्राफ की स्लोप कितनी है? y एक्सिस पे I प्लॉट किया, x एक्सिस पे h, तो स्लोप इज y by x, मतलब I by h क्या है? ससेप्टेबिलिटी। तो मतलब इस ग्राफ की जो स्लोप है वो ससेप्टेबिलिटी है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ससेप्टेबिलिटी, तो स्लोप कम होगी। स्लोप किसकी कम है?
T1 की T2 की, तो मतलब T2 ज्यादा टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ससेप्टेबिलिटी कम हो गया, ग्राफ की जो स्लोप है वो ससेप्टेबिलिटी की। समझ में आया पैरामैग्नेटिज्म का? तो हमने कहा कि पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें हर एटम जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। जब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तब तक डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड एंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया टॉर्क एक्टिव डाइपोल्स ट्राइज टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अलाइनमेंट कंप्लीट नहीं होती बिकॉज थर्मल एजिटेशन ट्राइज टू ब्रेक द अलाइनमेंट। अगर आपको अलाइनमेंट बढ़ानी है तो बी को बढ़ा दो, टेम्परेचर को कम कर दो। ससेप्टेबिलिटी का कंसेप्ट है कि ससेप्टेबिलिटी इज आई बाय एच। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंटेंसिटी फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एच, कि एच को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर बढ़ाया तो आई कम हो जाएगा, इसलिए ससेप्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अदरवाइज आई बाय एच का ग्राफ बनाओगे तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन। क्लियर है सारा? सेकंड रेट पैरामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। Paramagnetism or paramagnetic substances. Paramagnetic substances are those in which there are unpaired electrons. Paramagnetic substances are those in which there are unpaired electrons. And even in the absence of external magnetic field, in which atoms have unpaired electrons, and even in the absence of external magnetic field, each atom will have magnetic dipole moment of its own. Each atom will have magnetic dipole moment of its own and behaves as a tiny dipole, a tiny magnet, and behaves as a small magnet, and behaves as a small magnet. If paramagnetic substances are placed in non-uniform magnetic fields, they tend to move from weaker parts of magnetic field to the stronger parts. जैसे इस पे कंसेप्चुअल आया था नीट के एग्जाम में, उन्होंने ऐसे पूछा था कि हमारे पास एक यूट्यूब है, it's like diamagnetic liquid field. As a diamagnetic liquid field. तो उन्होंने कहा कि इसे ये लिंक ए, साइड बी। उन्होंने कहा हमने साइड ए के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो इससे लेवल ऑफ लिक्विड में क्या फर्क पड़ेगा? जिधर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया लिक्विड टेंड्स टू मूव फ्रॉम, इधर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है या इधर ज्यादा है, तो लिक्विड टेंड्स टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर, वो इधर आ जाएगा, मतलब इधर से लेवल बढ़ जाएगा और इधर से कम हो जाएगा, because liquid tends to move from weaker parts of the magnetic field to the stronger parts. पैरामैग्नेटिक फील्ड क्या, डायमैग्नेटिक होता तो पैरामैग्नेट है तो इट टेंड्स टू मूव फ्रॉम, किया गया पैरामैग्नेट है, पैरामैग्नेटिक लिक्विड, तो इसका लेवल बढ़ेगा और इसका कम हो जाएगा। डायमैग्नेटिक होता तो
opposite. It moves from stronger to weaker parts. तो इधर से लेवल नीचे हो जाता है उस साइड से ऊपर हो जाता है. So you can write them placed in non-uniform magnetic field. Paramagnetic substances move from weaker to stronger parts. So the right explanation या cause of paramagnetism. Cause of paramagnetism. और ये दोनों डायग्राम बना लो. Cause of paramagnetism. जो डाइपोल मूवमेंट होती हुई फर्स्ट में रैंडम ओरिएंटेशन, सेकंड में 2-3 के डायरेक्शन डिफरेंस हो गए. So you can write paramagnetic substances are those in which. Paramagnetic substances are those in which. Paramagnetic substances are those in which each atom behaves as a small magnet. Each atom behaves as a small magnet with its own magnetic dipole moment. With its own magnetic dipole moment. When no external magnetic field is applied. When no external magnetic field is applied. The dipoles will be in random orientation. Dipoles will be in random orientation. And net dipole moment will be. Dipoles will be in random orientation. And net dipole moment will be 0. Dipoles will be in random orientation. And net dipole moment will be 0. But if external magnetic field is applied, torque acts on. But if external magnetic field is applied, torque acts on magnetic dipoles, which tries to align the dipoles. Torque acts on magnetic dipoles, which tries to align the dipoles in the direction of field. The stable equilibrium position is when dipole moment and stable equilibrium position is when dipole moment and external magnetic field are parallel to each other. The magnetic field tries to align the dipole, whereas thermal energy magnetic field tries to align the dipoles, whereas thermal energy tries to break the alignment. Thus, alignment is never complete. In a paramagnetic substance. Alignment is never complete in a paramagnetic substance. To increase the alignment,
To increase the alignment, we can increase the applied field and decrease the temperature. Applied field and decrease the temperature. Next, variation of susceptibility with temperature. Variation of susceptibility with temperature. Example बनता है but almost ferromagnet because ferromagnet में सिर्फ alignment नहीं होगी ना, ferromagnets की एक और property भी होती है, they retain their magnetic field. Paramagnets retain नहीं कर पाते, आप एक बार ये align कर दोगे, आप magnetic field हटाओगे फिर से alignment break हो जाएगी. Ferromagnets की एक खास property होती है, they are able to retain their magnetic properties. एक बार ये align कर दिया तो वो align ही रहते हैं. फिर फील्ड हटा भी लो, जैसे आप परमानेंट मैग्नेट है, तो परमानेंट मैग्नेट ये होती है ना, आपने एक बार डाइपोल्स को अलाइन कर दिया, एल्निको स्टील की बनती है, एल्यूमिनियम निकल को बाहर कॉपर का अलॉय, एक बार आपने डाइपोल्स को अलाइन करके उसे मैग्नेट बना दिया, तो बाद में से मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लोगे तो वो अलाइन ही रहेगा. तो पैरामैग्नेट्स में रिटेन करने की प्रॉपर्टी नहीं होती. Variation of susceptibility with temperature. It was experimentally found that intensity of magnetization of paramagnetic substance increases with increase in magnetizing field that is I is directly proportional to H. Magnetizing field that is I proportional to H. If graph is plotted between I and H, it will be straight line. The graph plot होगा. If graph is plotted between I and X, it will be straight line. The slope of the graph is susceptibility of the substance. Slope of the graph is susceptibility of the substance. Also, it was found that intensity of magnetization decreases with temperature. Intensity of magnetization decreases with temperature. That is, earlier the I proportional to H, now it will be I inversely proportional to temperature. Or chi is equals to C by D. This relation is known as Curie's law. And C is constant of proportionality. This relation is known as Curie's law. And C is constant of proportionality.
called Curie's. This relation is known as Curie's law, and constant of proportionality is called Curie's constant. As shown in the graph, as slope at temperature T2, as slope at temperature T2 is less than slope at T1. Therefore, susceptibility at T2 is susceptibility at T2 is less than susceptibility at T1. T2 का susceptibility कम है तो temperature T2 का ज़्यादा है. Implies T2 is greater than T1. Implies T2 is greater than T1. अगर 1/I और T का ग्राफ बनाए तो मैं अगर एक एक्सिस पे लूं यहां से देखो 1/I किसके इक्वल होगा, मतलब 1/I is directly proportional to T और स्लोप कितनी हो जाएगी इसकी 1/C. मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा इसमें लगेंगे स्ट्रेट लाइन. मोड में पूछा था हमने 1/I और T का ग्राफ, so it will be straight line. So draw कर दो मुझे graph between 1/I and T. ये नॉर्मल जब तक कोड में नहीं आया था ऐसे ग्राफ दिए नहीं होते कुछ में, बट ये फॉर्मूला तो दिया था तो हमारे पास अगर ये फॉर्मूला है तो इसी की ग्राफ बना ही सकते थे 1/I और T का कि chi is equals to C/D तो 1/I is T/C, मतलब 1/I and T are proportional. तो उसको भी देखो स्टूडेंट कह देते हैं मुश्किल पेपर था बुक में था नहीं एक्चुअली, तो इतना तो दिमाग चलना चाहिए फिजिक्स के पेपर. अगर आपके पास इक्वेशन है तो आप ग्राफ बना सकते हो. Next is ferromagnetism. Ferromagnetism or ferromagnetic substance. Ferromagnetism or ferromagnetic substance. Ferromagnet और paramagnetic में सिर्फ ऑर्डर का फर्क होता है. Ferromagnetic substances में भी हम कहेंगे कि atom behaves as a tiny magnet, small magnet की तरह एक्ट करेगा. जब तक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया नेट डाइपोल मोमेंट इसमें भी जीरो रहेगी. जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करेंगे तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट मूव्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स हम सिर्फ लिख देंगे इट क्विकली मूव्स बिकॉज अट्रैक्शन इज लार्ज. तो बहुत जल्दी वीकर से स्ट्रॉन्गर पार्ट्स की तरफ मूव कर जाएगा. देयर इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन. एग्जांपल फेरोमैग्नेट्स के, पैरामैग्नेट्स में तो हम कहते हैं अनफिल्ड इनर्शियल्स अगर पीरियोडिक टेबल आता है तो. फेरोमैग्नेट के टिपिकल 5 ही एग्जांपल हैं सर. आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलीनियम और डिस्प्रोजियम प्लस इनके अलॉयज. मतलब इनके अलॉयज को भी जैसे निको स्टील इज एन अलॉय. निको स्टील इज आयरन, निकल, कोबाल्ट और कॉपर. तो उसको हम कह देते हैं कि इसका जो अलॉय बनेगा दैट इज निको स्टील फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स. फेरोमैग्नेट्स की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी डिफरेंट रहती है व्हिच इज क्वाइट क्वांटम मैकेनिकल. क्लासिकल फिजिक्स में इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन होती नहीं है. हम कहते हैं कि फेरोमैग्नेटिज्म कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अ थ्योरी दिस इज एज डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म. Domain theory of ferromagnetism says that each ferromagnetic sample is divided into large number of domains, small regions. मतलब छोटे-छोटे regions में पूरे ferromagnetic sample को divide कर देंगे. उस छोटे region को हम बोलेंगे domain. हर domain की जो dimensions होंगी that's of the order of 1000 angstrom. 1000 angstrom मतलब
10⁻⁷ मीटर। तो जैसे पेन फेरोमैग्नेटिक है, इसको छोटे छोटे आप ऐसे assume कर लो क्यूब्स में डिवाइड कर दिया, और एक क्यूब की जो साइड है दैट इज 10⁻⁷ मीटर, और उसमें 10⁻10 एटम्स है थर्ड डोमेन में रफली। Due to quantum mechanical effect, it's normally called exchange coupling. It was found कि ferromagnetic sample जो है वो large number of domains में divided होता है। थर्ड डोमेन के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सबकी डाइपोल मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होगी, डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट डायरेक्शंस में हो सकती है। पैरामैग्नेट में था कोई डोमेन नहीं है, कोई रीजन नहीं है, सारे डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड है। हम फेरोमैग्नेट का अगर डायग्राम बनाएं तो हम ऐसे 3 डायग्राम से शो करते हैं कि मान लो ये मेरे पास एक फेरोमैग्नेटिक सैंपल है, इसको हमने लार्ज नंबर ऑफ डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे मान लो 4 रीजन्स, और आई एम सेइंग एक डोमेन के अंदर जितने भी डाइपोल्स हैं वो सब सेम डायरेक्शन में होंगे। एक डोमेन के अंदर सब सेम डायरेक्शन में, डिफरेंट डोमेन्स में और डिफरेंट डायरेक्शंस में। हम लिख तो देते हैं कि इन डिफरेंट डोमेन्स दे आर इन रैंडम ओरिएंटेशन, बट एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड कि वो टोटल रैंडम डायरेक्शन नहीं होती। डोमेन्स के अंदर जो डाइपोल्स होंगे दे आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। जैसे इसमें मैंने कौन सी 4 डायरेक्शंस शो की है, x माइनस x, y माइनस y, 2 डायरेक्शंस और शो कर सकते थे z और माइनस z, कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे डोमेन्स के अंदर डाइपोल्स। अभी मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया बिकॉज ऑफ रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ डोमेन्स, इसके डाइपोल मूवमेंट भी 0 है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टॉप एक्ट ऑन द डाइपोल्स, कौन सी डोमेन है जिसमें टॉप नहीं एक्ट करेगी, जैसे मतलब नंबर था जो 1 2 3 4 1, बिकॉज 1 में डाइपोल्स आर ऑलरेडी पैरेलल, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब नेट टॉप 0 है, तो इस पे कोई टॉप एक्ट नहीं करेगी, पर इन पे टॉप एक्ट करेगी इन डोमेन्स में, तो इनकी दे ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। सेकंड डायग्राम जो हम बनाते हैं वो हम ऐसे बना देते हैं, इसका मतलब है कि जिस डोमेन में डाइपोल्स पैरेलल थे उसका साइज बड़ा होना शुरू हो गया, और ये जो बाकी डोमेन्स थी ये श्रिंक करने लग गई। इसको हम लिखते हैं द साइज ऑफ डोमेन इन विच dipoles are parallel to external magnetic field, its size begins to grow at the expense of other domains। मतलब बाकी डोमेन श्रिंक होनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल थे वो इसका साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा। इसको कई बार हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ डोमेन बाउंड्रीज, तो डोमेन की बाउंड्रीज शिफ्ट होने लगी, तो पहले ये बाउंड्री थी तो ये शिफ्ट होकर नीचे आ गई, सिमिलरली ये बाउंड्री थी, ये भी शिफ्ट होकर नीचे आ गई। अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे सारे डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे। उस केस में फिर हम डायग्राम जो बनाते हैं वैसे बना देंगे, अब ये डोमेन बाउंड्री हटा भी सकते हैं, जैसे इट विल बी अ सिंगल लार्ज डोमेन और सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे। इसमें हम कंप्लीट अलाइनमेंट शो करते हैं, जैसे उसमें हमने 2-3 की डायरेक्शन डिफरेंट शो की थी, इसमें हम शो करेंगे सिंगल लार्ज डोमेन बन जाएगी और सारे डाइपोल्स उसी डायरेक्शन में होंगे। तो पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट में डिफरेंस क्या है, फेरोमैग्नेट में कंप्लीट अलाइनमेंट है, पैरामैग्नेट में पार्शियल अलाइनमेंट है।
अब फेरोमैग्नेट को अगर पैरामैग्नेट बनाना है तो हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बिकॉज अलाइनमेंट टूटेगी कैसे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके अलाइनमेंट ब्रेक होनी शुरू हो जाएगी। उस टेम्परेचर में भी सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चेंजेस इनटू पैरामैग्नेटिक एंड दैट टेम्परेचर इज आइदर कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन और क्यूरी टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर एट व्हिच फेरोमैग्नेट चेंजेस इनटू पैरामैग्नेट। क्लियर है फेरोमैग्नेट का कंसेप्ट। एक चीज जो आपको नहीं क्लियर, मैं पहले बता देता हूँ, मैंने इसमें टर्म यूज किया एक्सचेंज कपलिंग। एक्सचेंज कपलिंग स्पिन स्पिन इंटरैक्शन। आप में से किसी ने मुझसे पूछा नहीं ना कि एक डोमेन के अंदर सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में क्यों लाइन होंगे, पूछना चाहिए था ना, और मैंने कहा और आपने मान लिया। आप पूछ भी लेते तो मैंने ये कहना था रट्टा मार लो, बिकॉज ये क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन है, केमिस्ट्री में थोड़ी सी थी पर नहीं की आपने, मेरे को बताया सुबह वाले बैच में कि केमिस्ट्री में हमने नहीं पढ़ी। मैं पढ़ाने शुरू करूंगा तो मेरे को 2-3 दिन केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ जाएगी, तो इसलिए मैंने ये बोला याद कर लो, बिकॉज ये टर्म्स है किसी जगह एक बार यूज होनी है पूरे सिलेबस में। हम लिख देंगे टर्म कि ड्यू टू एक्सचेंज कपलिंग ऑल द डाइपोल्स इन अ गिवन डोमेन आर अलाइन्ड इन द सेम डायरेक्शन। बेसिकली एंगुलर मोमेंटम कैसे इंटरैक्ट करते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स के, उसको हम स्पिन इंटरैक्शन बोलते हैं। तो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री में थी, पहले थी, अब शायद नहीं है, तो आपने पढ़ी नहीं होगी केमिस्ट्री में भी। So you can write ferromagnetic substances or ferromagnetism. पूछना कुछ क्या? टॉप का फॉर्मूला क्या होता है? M क्रॉस B। कहाँ पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है फॉर्मूला M क्रॉस B? टॉप का कोई फॉर्मूला पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स में? IA क्रॉस B। IA क्या होता है? M पढ़ा है, ऐसे देख लो जैसे पढ़ाई की आपने पूरी डेरिवेशन की थी, हमने से पूरी डेरिवेशन की थी। और इज इक्वल्स टू और ये M होता है, अगर M और B पैरेलल है तो टॉप 0, इसलिए फर्स्ट डोमेन में तो कोई टॉपिक नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी लाइन का मतलब मेरे को आप सबको एक लाइन में खड़े करना है, तो जो ऑलरेडी लाइन में खड़े हैं उनको थोड़ी मैं कुछ बोलूंगा, जो नहीं खड़े उन्हें लाइन में खड़ा करना है। अगर तो नहीं है तो सबका डॉमिनेट करेगी जब तक वो पैरेलल हो नहीं जाते। बाउंड्री शिफ्ट होंगी और एक बड़ी डोमेन बनेगी जिसमें डायरेक्शन वही होगी जो एक्सटर्नल भी। So you can write ferromagnetic substances. Substances which are strongly attracted. Substances which are strongly attracted by external magnetic field. Or when placed in non-uniform field, they quickly moves from weaker parts of the magnetic field to the stronger parts. Each atom in a ferromagnetic substance. Each atom in a ferromagnetic substance behaves as a small magnet. Each atom in a ferromagnetic substance behaves like a small magnet. Each atom in a ferromagnetic substance behaves like a small magnet.
but in the absence of magnetic field. Ferromagnetic substances will not show any magnetic behavior. It's the domain theory of ferromagnetism. Domain theory of ferromagnetism. Domain theory of ferromagnetism. लास्ट स्टेज को हम कहते हैं सैचुरेशन मैग्नेटिज्म. सैचुरेशन मैग्नेटिज्म मतलब सारे डाइपोल्स अलाइन हो गए, इसके बाद अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे भी तो डाइपोल मूवमेंट नहीं बढ़ सकती. बस जब सारे ऑलरेडी अलाइंड है तो उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, तो सैचुरेटेड स्टेट हो गई. तो तीनों डायग्राम बना एनसीईआरटी में बढ़िया से बना लो. एक बार रिएक्टिव हो गया होगा फिर zero. हम इससे ज्यादा सेव करना है तो नीचे बैठ के पढ़ ले. मैं भाई स्क्रीन कर रहा हूँ, यूट्यूब पे देख रहा, बाकी का एक्टिवा का ध्यान में रखा जाएगा. According to domain theory, each ferromagnetic substance. According to domain theory, each ferromagnetic substance is divided into a large number of small regions called domains. Large number of small regions called domains.